morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 5, Natural Vegetation. In this chapter, we discussed about the types of the forest found in India. Now, the forest cover in India. How many parts of land is covered by the forest in India? There is 23.28%. According to state record, the forest area covers 23.28% of the total land area of the country. इंडिया का जो 332,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, in which the 23.28% area covered by the forest. It is important to note that the forest area and the actual forest cover are not the same. Forest area or actual forest are not the same. The forest area is the area notified and recorded as the forest land irrespective of the existence of trees. कि forest area वो है जहाँ पर ट्रीज नहीं है, वो एरिया में उसी में काउंट होता है. While the actual forest cover is the area occupied by forest with canopy. With canopy का मतलब है कि वहां पर ट्रीज जो हैं वो होंगे ही होंगे. तो एक है एक्चुअल एरिया और एक है फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट एरिया वो एरिया है जहां पर वो पार्ट में इंक्लूड होगा जहां कोई ट्रीज हैं या नहीं. सपोज कि ये एक एरिया है और इस एरिया में यहाँ ट्रीज हैं, ये ट्रीज फाउंड हो रहे हैं, फॉरेस्ट है, तो ये फॉरेस्ट एरिया है. बट एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया कि जब इतने पार्ट पर कोई ट्रीज नहीं है तो दैट एरिया इज द एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया. जितने पार्ट पर ट्रीज हैं, ओनली कैनोपी जहाँ पर है उसी को काउंट किया जाएगा, उसी को माना जाएगा फॉरेस्ट, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया. While the actual forest cover is the area occupied by forest with canopy, the former is based on the records of the state revenue department. और ये जो रिकॉर्ड है ये स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो रखता है, और उसी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डेटास हैं वो दिए जाते हैं. तो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट while the latter is based on actual photographs and satellite imaging. तो पहले जो ये डेटा दिए जाते थे ये स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता था उसके थ्रू जो पब्लिश रिपोर्ट होती थी, स्टेट रेवेन्यू रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो डेटा दिया जाता था कि कितना परसेंट एरिया एक्चुअल फॉरेस्ट एरियाज में आता, कितना एरिया फॉरेस्ट एरियाज में. बट एट प्रेजेंट और nowadays the new technology, in this technology the aerial photography or satellite imageries, according to India State of Forest Report 2011, the actual forest cover in India is 21.05%. according to India State of Forest Report. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग 21.05% एरिया इज द एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया. ऑफ द फॉरेस्ट कवर द शेयर ऑफ डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर. यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट जो घने फॉरेस्ट हैं 12.29% एंड ओपन फॉरेस्ट आर 8.75%. So these are the two categories of the actual forest, dense forest and open forest. Dense forest 12.29%, actual forest, open forest are 8.75%. Both forest area and forest cover vary from state to state. ये जो डेटा है स्टेट टू स्टेट जो है इनमें वेरिएशन आता है. लक्षद्वीप है 0% फॉरेस्ट एरिया, लक्षद्वीप में 0% फॉरेस्ट एरिया, while अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है 86.93%. Most of the state with less than 10% of the forest area lies in the north and northwestern part of the country.
जिन स्टेट्स का 10% से भी कम फॉरेस्ट एरिया है, दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. These are Rajasthan, Gujarat, Punjab, Haryana and Delhi. Most of the forests in Punjab and Haryana have been cleared for cultivation. Most of the forests in Punjab and Haryana have been cleared for cultivation. वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए उन फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया गया. State with 10 to 20% forest area are तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल. तो 10% से कम जो हैं वो एरियाज हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक द हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एटसेट्रा. एंड द स्टेट विच हैव 10 to 20% are तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल. इन पेनिनसुला इंडिया excluding Tamil Nadu, Dadra and Nagar Haveli and Goa, the area under forest cover is 20 to 30%. तो ये एरियाज हैं जहाँ 20 से लेकर के 30% तक फॉरेस्ट एरिया. हिली टोपोग्राफी एंड हैवी रेनफॉल आर गुड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ. कि हिली टोपोग्राफी में और जहाँ हाई रेनफॉल होती है, these climatic conditions are good for the forest area. There is a lot of variation in actual forest cover, which ranges from 9.56% in Jammu and Kashmir to 84.01% in Andaman and Nicobar Island. जम्मू कश्मीर में जहां केवल 9.56 एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है, वहीं अंडमान निकोबार में 84.01% एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट. From the table showing the distribution of forest in India, Appendix 4, it is clear that there are 15 states where the forest cover is more than 1/3 of the total area, which is the basic requirement for maintaining the ecological balance. The forest conservation, कि इन फॉरेस्ट को बचाना क्यों जरूरी है और what are the objectives of the forest conservation and forest policy and why the forest conservation is important. So conservation, forest conservation is very important due to the importance of the trees or the forest in various forms. Forests have an intricate interrelationship with life and environment. Life और environment के बीच में एक जो interrelationship है वो फॉरेस्ट के थ्रू चलती है. These people numerous direct and indirect advantages to occur economy and society. So there are lot of economical and social benefits of the forest. Hence conservation of forest is of vital importance to the survival and prosperity of humankind. So forests are important to the survival and prosperity of humankind. Accordingly, the government of India proposed to have a nationwide forest conservation policy. Government of India ने एक state forest conservation policy जो थी वो बनाई and adopted a forest conservation policy and adopted policy in 1952. सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई 1952 में and it was modified in the year 1988. 88 में उसको modified किया, कुछ changes किए, which was the government will emphasize sustainable forest management in order to conserve and expand forest reserve on the one hand. तो इसका जो main purpose था वो modified करने का फॉरेस्ट पॉलिसी का वो ये था कि कंजर्व भी किए जाएं और नए भी लगाए जाएं. Expand forest reserve and conserve them on the one hand and to meet the needs of local people on the other. और local peoples के जो requirement हैं उनको वो fulfill करें. The forest policy aimed at. What are the purpose of forest policy? These are
Objectives of the forest policy तो bringing 33% area under forest area. कंट्री का 33% एरिया जो है उसको फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना है. इट मींस एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया. सेकंड वन इज द maintaining environmental stability and to restore forest where ecological balance was disturbed. तो जहां इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है उस बैलेंस को मेंटेन करना है. एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना है. कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ कंट्री, इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल. इसकी जो डाइवर्सिटी है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, बायोडाइवर्सिटी को, नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करना. increasing the forest area and check soil erosion, extension of the desert lands and reduction of floods and droughts. इनको कम करने के लिए भी हमें फॉरेस्ट पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ी. increasing the productivity of forest to make timber, fuel, fodder and food available to rural population dependent on forest and encourage the substitution of wood. कि लोगों की जो लोकल पीपल्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, उनको फुलफिल करना और उनके लिए वुड का कोई सब्स्टिट्यूट है वो तलाशना. क्रिएटिंग ऑफ ए मैसिव पीपल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वुमेन टू एनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, stop falling of trees and thus reduce pressure on the existing forest. कि अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस स्पेशली इन वुमेन स्प्रेड की जाए ताकि फॉरेस्ट जो है एफॉरेस्टेशन हो सके और डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस किया जा सके, रोका जा सके. स्टॉप फैलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटने से रोकें. thus reduce pressure on the existing फॉरेस्ट, ताकि फॉरेस्ट जो लैंड है उसके ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर को कम किया जाए. फॉरेस्ट एंड लाइफ. टू ए वास्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल द फॉरेस्ट इज ए फॉर्म और ए लाइवलीहुड देयर वेरी एग्जिस्टेंस. इट प्रोवाइड्स देम फूड, फ्रूट्स ऑफ ऑल काइंड्स, एडिबल लीव्स, हनी, नर्सिंग रूट्स एंड वाइल्ड गेम. इट प्रोवाइड्स देम with material to build their houses and items for precosting. So these are the importance of the trees. What are the requirements or needs of the trees? The importance of forest in tribal economy is well known as they are the source of subsistence and livelihood. तो उन लोगों के लिए वो सब्सटेंस और लाइवलीहुड के सोर्स हैं और इसीलिए वो इम्पोर्टेंट. इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट द ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन ए हार्मनी विथ नेचर एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 593 डिस्ट्रिक्ट्स, 188 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट. तो टोटल जो 593 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 188 डिस्ट्रिक्ट्स को ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में के रूप में फाउंड किया, आइडेंटिफाई किया. द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अकाउंट फॉर अबाउट 59.61% of the total forest cover of the country, whereas the geographical area of 188 tribal districts form only 33.63% of the total geographical area. Forest and tribals are very closely related. The as-old knowledge of tribal regarding forestry can be used in the development of forest. जो पुराने लोग हैं उन लोगों के जो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट के जो मेथड्स हैं, नॉलेज है उनका, उनके थ्रू हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं. So the forest and life are interrelated.